Good afternoon and namaste, subcourse, all the viewers and the participant. Today we are going to see administration of injection procedure in clinical setting. Myself, Dr. ANJALATCHI, working as a Vice Principal in ARA College of Nursing and ARA Lucknow Medical College and Hospital and ARA University. We will see today administration of injection procedure in clinical setting. What is injection? Medications administered in the muscles known as the intramuscular. Medication administered in the vein is called the intravenous. Medication administered in the dermal is called the intradermal. Medication administered in the subcutaneous is a subcutaneous. These all we can say as a injection administrations. Mainly 4 types of injections regular use of in the clinicals. What is injection? Injections are sterile and solutions, emulsions or suspensions, and they are prepared by dissolving, emulsifying or suspending as an active ingredient and any other substance in the water for injection that should be given temporary relief of certain signs and symptoms of the person. Injection is the acting of giving one type of medications, so temporary relief of the person's symptoms in the clinical setting. It may be ampoule or it may be the vials, it may be the multiple vials, different substitutes we are available in the market. What is injection procedure? Injections is the art of giving medications through the uses of needle and syringe with followed by the sterile technique. There are several. So different types of injections are available in the clinical set. It's already we discussed, that is a subcutaneous, intradermal, intravenous, intraosseous and intramuscular. So these are the different methods are there, but we can follow one by one and different methods to restore the blood volume by replacing fluid. So usually हम already बोला था intravenous administrations, वो हम restore the blood volume. Normally per person 5 liter of blood in the body. Maybe loss होगा, dehydrated होगा, उसी के लिए हम replace करने के लिए intravenous way हम try करते हैं. उसी पे हम to restore blood volume by the replacing fluid. So we can administer for the fluid. To give nourishment when it cannot be taken by the mouth. So mostly ICU patients, total parenteral nutrition will be given for the as a diet as well as the medication as well as the fluid. So we are selecting the way is TPN, total parenteral nutrition in the mouth. So it is a one way for giving medication to the patient as a diet. There are 4 types of injections are available that I already told you. When the injection was given in the muscle, we can say is the intramuscular injections. When the injection is given on the subcutaneous, we can say the subcutaneous injections. When the injection is given in the dermal, we can say is the intradermal injection. When the injection is given in the veins, that we can say intravenous. So this is a mainly we can give the angle of injections to that. In case IM 90 degree we have to give. For the subcutaneous, maximum we can try for the 45 degrees. And intravenous, we can give the 25 degrees. And we can give intradermal 10 to 15 degrees of angle. And terms we can use, there are main sites for giving injections. Anterolateral. That is a portion we given for the patients in the thigh. Then greater trochanter. We can give iron injection in the gluteal muscles. Then trauma informed the practice. So we always have the when injection is given, it's going to be pinpoint of prick. It will make some kind of pain and it will be relieved immediately after injection is delivered. And isotrochic. It is a one type of technique we can use to give the certain oil type of injection administered to the patients, like a vitamin B12 is oil. When we give it, so we can use for the zit tracking technique to provide the medication to the patient body, because it should not take any leakages. It is very hard to press to give the injection to the patient's muscles for that. And vastalis lateralis is another site, so where we given rectus femoris, under that vastalis intermedius, vastalis lateral and vastalis medius. So we are going to give, this is the site for giving vastalis lateralis for injection. Even adult also we can give. You can most preferably we can use for the children's and the immunizations. Another one, deltoid. So deltoid, it is a mainly we are giving under the preferred injection is 3 to 18 years of age.
and mostly because muscle is developed under the deltoid area. So this is where they need showing. From the acromion process, we can keep 2 fingers below and find out the muscle and catch to hold it. Then we can give injection, because if we hold it, अगर हम कैच करके देते हैं पेशेंट्स को, पेशेंट दर्द नहीं होगा. They will get smooth and with the easy technique to deliver medication to the muscles. And dorsogluteal, that is, we can say in the backside of the buttocks, it will be goes on the dorsogluteal is not a preferred site due to proximity of the sciatic nerve, but a major blood vessels. So we can use, those who are skilled persons can use on the dorsogluteal area for giving medication, injection to the patients. How to form the V shape? So when we are going to the V shape, from the iliac spine, we have to draw like that. Then we can find out the central part of the backside. From there and from here, we can make the imaginary line of V. From there, we can give V shape of giving injection to the persons. If you found like that, अगर हम पेशेंट की V शेप ऐसे करके देते हैं, तो इसी से पेशेंट्स को कभी कभी इंजेक्शन देने में नर्व्स के अंदर चली जाती है, इस वजह से पैरालाइसिस हो जाती है. तो हर हम ऐसा दे दें, so patient will be good, and we are also practice better technique, and we can prevent the complication of paralysis to the patient. That's why every healthcare profession must to know how to give injection in different technique, an easy way, and how to follow with a sterile base. What are that assessment we can carry out? Before giving injection, what we have to check? Check the diagnosis and age of the patients, because it's very must. पेशेंट की कौन सी डायग्नोस है, उसी बेस में क्या एंटीबायोटिक देना, एंटीबायोटिक देना, एनाल्जेसिक देना, एंटीहिस्टामिन देना, एंटी मसल रिलैक्सेंट देना, कौन सी ड्रग देना है, सेडेटिव क्या है. देन उसी के एज क्यों मालूम है, अकॉर्डिंग टू द वेट पर केजी पर बॉडी वेट लाइक दिस हम ड्रग देना. इसीलिए पेशेंट्स को डायग्नोस क्या है, उसी को एज क्या है कंफर्म करना है. देन द पर्पज ऑफ इंजेक्शन, सर्टेन इंजेक्शन वी आर गिविंग वाई. As a healthcare profession, we must know what is the pharmacological name and what is the drug dose and how much mg we have to give, and whether certain drugs will be available accurate dosage, certain drugs will be in double storage, certain drug will be getting on the single. So we have to add and we have to minus, we have to dilate, and we have to take certain required dose of injection. So that's why. And what the even you can ask patient से अभी पूछें क्या तकलीफ हो रही है आपकी, उसी तकलीफ से आप समझ मालूम होगा तो ओके पेशेंट की ये एलर्जी है, इसी वजह से हम इंजेक्शन CPM दे रहे हैं. इस तरीके हमको मालूम होना पड़ेगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंजेक्शन वी आर गोइंग टू गिव दी ऑन दिस. देन and the doctor's order, it is very important. It should be prescribed based on the concerns of doctor only. So we have to check and what is the doctor order, when which type of dose and what is the time is given and what is the route is written. Like this we have to find type of drugs, dosage and time and route of drug administrations. The patient name and bed number. It's because we need a now UHID, that is unique hospital identification number. Based on that, it's a compulsory once, twice and thrice. इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है. पेशेंट के नाम, कभी कभी 2 पेशेंट होंगे, कभी कभी 2 नंबर होगी, कभी कभी 2 उम्र सेम होगा, तो इसी तरह के पेशेंट से हम कंफ्यूज ना करना. इस वजह से दूसरे पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड होने के लिए चांस है, इसलिए हम पेशेंट के नाम एंड बेड नंबर and UHID number identify करना. The nurses record to find out the time at what the last dose given, because every drug is given every 12 hourly, every 6 hourly और every 8 hourly. इसीलिए हम ड्रग को लास्ट डोज कब दिया, उसी डोज से नेक्स्ट डोज हम देने के टाइम पे एग्जैक्ट 8 आवर्स हो गया, एग्जैक्ट 12 आवर्स हो गया, एग्जैक्ट 6 आवर्स है क्या, अगर एवरी 4 आवर्स हो गया क्या, हम ये चेक करना है. देन द सिम्टम ऑफ ओवर द डोज एनालिटिक मस्ट नो. अगर कोई ड्रग हम दे रहे हैं, ये ड्रग कौन सी कॉम्प्लिकेशन करेगा, एंड अगर ओवरडोज हो गया क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा, अगर लेस डोज होगा क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, ये कंपल्सरी है. एवरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल मस्ट नो, एक्सपेशली फॉर द नर्सिंग ऑफिसर्स. कंपल्सरी मालूम होना पड़ेगा. इसी अगर हम पैरासीटामोल दे रहे हैं, पैरासीटामोल ज़्यादा हो गया तो पेशेंट की क्या होगा, हेपेटोमेगाली, इस तरह की एक एक कंडीशन की एक एक दवाई की ज़्यादा डोज होंगी क्या है, इसलिए हम उसी को असेस करना बहुत ज़रूरी है. The form of medicine is available and correct method of administrations. क्या ड्रग हम दे रहे हैं, 100 mg, 200 mg, we should be prepared. According to that only we can give for the administration of the patient. Then the patient need will be fulfilled. What are the articles we should be keep ready before going for injections?
एक क्लीन ट्रे लेना है। उसी क्लीन ट्रे पे अगर हम यूजुअली कार्डेक्स कार्ड बोलते हैं, कार्डेक्स कार्ड क्यों बोलते हैं, मे बी नर्सिंग ऑफिसर्स बोल सकते हैं कौन सी दवा, सो उसमें दवा लिखना, कौन से फार्माकोलॉजिकल नाम लिखना, डोसेज लिखना, कौन सी साइट पे देना, किस कंप्लेंट के लिए देने, तो सब कुछ उसी पे लिखेंगे। तो वंस यू विल बी रिकॉग्नाइज, सो हाँ ये सही है, मैंने इंजेक्शन सही सेलेक्ट किया, मैंने इंजेक्शन पेशेंट को सही दिया है। इस तरह के हम एक कार्डेक्स कार्ड ले लेंगे। कार्डेक्स कार्ड इसलिए टू रिकॉग्नाइज एग्जैक्ट पर्पस ऑफ ड्रग एंड एडमिनिस्टर टू द पेशेंट्स और नॉट। देन सिरिंज एंड नीडल बहुत ज़रूरी है। IM देना है, सबक्यूटेनियस देना है, अगर हम एंडोडर्मल देना है एज पर द स्किन साइज, एज पर द डिग्री ऑफ लेना है। उसमें सिरिंज हम 22, 24, 26 इस तरह को सिरिंज को गाज बोलते हैं। सो 22 गाज, 24 गाज, 26 गाज, ऐसे हम सिरिंज एंड नीडल। सिरिंज देखते हैं 2 ml सिरिंज, 5 ml सिरिंज, 20 ml सिरिंज, 10 ml सिरिंज। हम 20 ml सिरिंज तो नहीं लगा पाएंगे IM। देन IM देना है, मीनिंग कितने ml देना है, 1 ml दे सकते हैं, 2 ml दे सकते हैं, उसी की कैपेसिटी के हिसाब से आप अप्रोप्रिएट सिरिंज एंड नीडल हम सेलेक्ट करेंगे उसी पे। तो देन अकॉर्डिंग देन स्टेरिल कॉटन, क्यों इट इज़ अ क्लीन प्रोसीजर। अंदर को इन्वेसिव में करते हैं वो हम टेक्निक में चले जाते हैं। बाहर की स्किन साफ करना है तो हम लोग को कॉटन ज़रूरत है, और गॉस पीस ऐसा ले सकते हैं। कॉटन पे किस जगह में हम पेशेंट्स को वाइप करना है उसी जगह आप टच नहीं करना है, उसी से 1 ml और 2 ml की स्प्रेट और डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन लेना है, उसी जगह से पेशेंट्स को वाइप करना है। इसी के लिए हमको कॉटन स्वैप चाहिए, और गास पीस में भी दे सकते हैं, इट डिपेंड अपॉन द हॉस्पिटल पॉलिसी। एंड मेथाइल स्प्रेट, तो दिस इज इम्पोर्टेंट है। मेथाइल स्प्रेट इज 70% मेथाइल स्प्रेट इज यूज्ड इन द हॉस्पिटल सेटिंग। तो हम हर क्लीन प्रोसीजर के लिए मेथाइल स्प्रेट लेते हैं। ये लेने में स्किन को डिसइंफेक्ट करेगा, हम किस साइट में सेलेक्ट करते हैं उसी पे पेशेंट्स को मेंटेन करेगा स्टेरिलिटी, इसलिए। एंड बॉल विथ वाटर, अगर हम इन केस कोई करने के लिए, कोई ऐसे करने के क्लीन करने के लिए जाता है, इसलिए हम लेना है। किडनी ट्रे टू कलेक्शन ऑफ ड्राई वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट। इन केस वेट है, अगर कॉटन ने मैंने वाइप किया वो वेट हो गया, तो वेट वाला को मैं किडनी ट्रे में ले लेंगी, एंड पेपर बैग में मैं ड्राई वाली ले लेंगी। एंड ड्रग ऑर्डर शीट, तो ये बोलो मैंने कॉडेक्स शीट, तो उसी पे कौन सी ड्रग आया, कितने डोज लिया, उसी के लिए हम लेते हैं। एंड एम्पल कटर, हमेशा हॉस्पिटल पे कभी भी हाथ से एम्पल नहीं कट करना, हैंड कोई राड लेके नहीं कट करना, एम्पल कटर लेना है, उसी से अच्छे से एम्पल कटर को रबिंग करके उसी को कॉटन बैक साइड पे सपोर्ट करके हैंड एम्पल को तोड़ देंगे। उसी तरीके हम प्रॉपर तरीके टेक्निक फॉलो करना है, वैसा इमीडिएटली आपको करना है, ऐसा कभी नहीं करना है। स्मॉल कवर्ड ट्रे फॉर कैरी आउट द इंजेक्शन, मैंने इंजेक्शन प्रिपेयर होने के बाद छोटी सी ट्रे पे रखी, पेशेंट साइट को लेके जाना है, वहाँ पेशेंट को इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। ये इधर लिखा है दिस इज अ एम्पल, वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ थिंग्स फॉर द एम्पल बोलते हैं। ग्लव्स यूज करते हैं इन केस पेशेंट ऑन HCV, हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस और हेपेटाइटिस HIV पेशेंट्स को हम प्रिकॉशंस करने के लिए PP यूज़ करते हैं। देन डिस्कॉर्ड, हम बायोमेडिकल वेस्ट में एम्पल किस में जाएगा, सिरिंज किस में जाएगा, कॉटन किस में जाएगा, इस तरह की चीज़ को हम ज़रूरी लेना है, उसी के साथ एक ट्रेस सट्टी। देन उसी को हम कॉडेक्स कार्ड, इस तरह की चीज़ को लेके, पैकेट में भी अवेलेबल है कॉटन की, गॉस पीस में भी अवेलेबल है, उसी बेस में हम इतने आर्टिकल तैयार करके इंजेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए जाना है। देन हाउ टू प्रिपेयर द स्टेप्स ऑफ इंजेक्शन। फर्स्ट है, हमने ऑलरेडी प्रिलिमिनरी बोला था, चेक द ड्रग एंड डोज ऑफ, तो इसलिए हम कौन सी ड्रग ले रहे हैं, इस तरह की ड्रग लेना है। एक्सपायरी ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग ड्रग, क्या क्वांटिटी, 2 ml 5 ml क्या है, कितने mg, सब हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम प्रॉपर तरीका उसी को लोडिंग करेंगे, डोज की कितनी 1 ml लेना है, 2 ml लेना है, कितने mg लेना है, इस तरह के हम ड्रग को लोड करेंगे। इस तरह की कैच करके हम लोड करना है। सामने होना चाहिए सिरिंज, 1 ml है, 2 ml है, उसकी मेजरमेंट हम लोग को नज़र पे आना है सामने, ऐसे लेंगे, फिर हम लोड करेंगे। 1 ml ले लिया, 2 ml ले लिया, इस तरह के हम धीरे धीरे सिरिंज को विड्रॉ करेंगे। अगर हमने लोडिंग कर दिया, लोडिंग सिरिंज अलग, इस तरह की लोडिंग होने के बाद उसी पे इस तरह के अगर हम इंजेक्शन प्रोपोलॉल, इंजेक्शन CPM, इंजेक्शन पैरासिटामोल ऐसे क्लियरली लोडर करके लेबल लगा के एक छोटी सी ट्रे पे रखी पेशेंट्स तरफ जगह की लेके जाएंगे, चाहे तो पेशेंट रूम पे होगा और पेशेंट बेड साइड होगा, इस तरह के हम लेके जाना है। लेके जाके हाउ शी वॉज कैरी, लेके आके पेशेंट से पहले इन्फॉर्म कंसर्न, पेशेंट को बताना है
आपकी ड्रग डॉक्टर ने ऑर्डर किया, ये तकलीफ थी, इस वजह से हमने दवा लेके आया, अभी ये दे देंगे आपको, इंजेक्शन दर्द रिलीफ होगा, ऐसे करना है. Then this is the technique how she was using. She was below the acromion process, keeping the fingers and catching the muscles and giving exactly 45 degree of angle. Like this, she can give the injection to the patients. And technique already we told you, every drug administer करने के पहले right patient, right dose, right time, right drug, right documentations बहुत ज़रूरी है. 5 rights of medication हम हमेशा follow करना है. Is every nursing officer must remember before if you are going. Then ड्रग हमने सेलेक्ट कर दिया, प्रिपेयर कर दिया, पेशेंट्स में भी हमने चेक कर दिया पेशेंट्स को कोई एलर्जी है नहीं है, हम कंसर्न डॉक्टर की में भी इन्फॉर्म कंसर्न में भी कर दिया, रिटर्न कंसर्न में भी ले लिया. देन वी हैव टू वॉश योर हैंड्स. कहाँ भी 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉश होती है कोई भी पेशेंट से प्रोसीजर करने के लिए. बिफोर टचिंग ऑफ द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर हैंडलिंग द प्रोसीजर, आफ्टर हैंडलिंग द प्रोसीजर, बिफोर हैंडलिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड और एनी एसेप्टिक प्रोसीजर करने के लिए जाते हैं. ज़रूरी है हमेशा याद रखना, यू शुड नॉट फॉरगेट वॉशिंग ऑफ योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर. एंड पुट योर ग्लव्स. आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इज नॉट एवरी केसेस नीडेड ग्लव्स. अगर कोई पेशेंट HBV, HCV और हेपेटाइटिस पेशेंट्स और HIV पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट होगा, वी शुड प्रोटेक्ट देम ऑल्सो, प्रोटेक्ट अस ऑल्सो, इसलिए हम ग्लव्स यूज़ करें. सो दैट इज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैज़ टू चेक वेयर आई कैन यूज़ PP फॉर द पेशेंट्स. एंड अल्कोहल ऑलरेडी हमने बोल दिया था. सो वी कैन यूज यूजुअली क्लीन द एरिया 2 इंच डायमीटर. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सी साइड में हम इंजेक्शन देंगे उसी साइड से हम ऐसे पॉइंट रखें तो पॉइंट में सर्कुलर मोशन पे क्लीन करेंगे, वैसा इस तरह को करके हम क्लीन करना है. तो बहुत ज़रूरी है वो क्लीनिंग टेक्निक. इनर टू आउटर, आउटर टू इनर, इस तरह हम देखेंगे. इनर से आउटर तरफ से हम सर्कुलर मोशन में क्लीन करके कब तक उसी एरिया ड्राई, बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने स्पिरिट से क्लीन किया, तुरंत इंजेक्शन इंजेक्ट किया, उसी पे वो अल्कोहल में भी इंजेक्शन के साथ पेशेंट बॉडी के अंदर जा सकते हैं. इसीलिए हम ड्राई करने के लिए वेट करेंगे. 1 सेकेंड 2 सेकेंड वेट करें, वो लेट इट ड्राई. आफ्टर ड्राई होने के बाद इन कैन गिव द प्रोसीजर. कैसे हम इंजेक्शन देंगे? इंश्योर द इंजेक्शन हम क्या है साइट पे 45 डिग्री या 15 डिग्री या 25 डिग्री या और 90 डिग्री, द टेक्निक वे शुड. पहले हम इंजेक्ट करें, इंजेक्ट करने के बाद नीडल को एस्पिरेट करें. कोई हम वेन से तो नहीं लगाया, कोई ब्लड से तो नहीं लगाया, तो वो ब्लड आ रही है नहीं आ रही है, दैट इज वी हैव टू चेक इट. इफ देयर इज नो ब्लड देन स्लोली पुश द मेडिकेशंस टू दिस मसल्स. स्लोली उनको प्रेस करेंगे पेशेंट से बात करके. हम बिना बात करने में नहीं देना, पेशेंट से बोलना अभी हम दवा दे रहे हैं, आप थोड़ा एडजस्ट करिए, मतलब कोई परेशान नहीं हो जाए, ऐसे पेशेंट से बात करके देना है. देन डोंट स्टिच योर मसल्स, डोंट बी टाइट फॉर योर स्किन, ऐसे उनसे बात करके लेना है. 2 ml इंजेक्ट करना, 1 ml इंजेक्ट करना, ऐसे हम इंजेक्ट करेंगे. वेट वेल फॉर रिमूविंग द नेडल, मतलब तुरंत हम होने के बाद वी ड्रग को क्विक में रिमूव करेंगे, नेडल को रिमूव करके फॉलोड बाई उसी पे कॉटन पे प्रेशर, और इधर कॉटन यूज़ करें और गॉस पेज यूज़ करें, उसी जगह की विड्रॉ करके हम सीधे से लगा दें, वैसे विड्रॉ करना ही कॉटन उस जगह में जेंटल प्रेशर, हैव टू गिव दी जेंटल प्रेशर, पेशेंट्स को वो ठीक होगा वैसा. देन पूछना है, देन दिस इज द आर्टिकल क्या क्या लेना है. हम सिरेंज गॉस भी ऑलरेडी बताया था मैंने, 25 गॉस, 23 गॉस, 21 गॉस ऐसे यूज़ करेंगे. देन प्रोसीजर ऑलरेडी फॉलो करना है, एसेप्टिक एंड 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉश ऑलरेडी हमने बता दिया था, वहाँ करके पिक्चर में दिखाया. देन राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडजस्ट करेंगे, देखेंगे, एंड PP क्या नीडेड है वो चेक करेंगे. देन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस फॉलो करके पेशेंट्स को इंजेक्शन देना है. उसी पे हम स्पेशल मॉनिटर क्या करना है, पेशेंट को हमेशा साइड इफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे विद इन 5 to 10 मिनट्स. पेशेंट किसी इंजेक्शन से एलर्जी हो गया, रैशेज हो गया, कोई रेडनेस आया उसी जगह में, पेशेंट की चक्कर आ गया क्या, तो इससे पूछेंगे अभी ठीक है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके कुछ एलर्जी आ रही तो कुछ ऐसे ही होंगी, तुरंत बता दीजिए, अभी कंफर्टेबल में बैठ जाइए, अब रिलैक्स हो जाइए. इस तरीके हम पेशेंट से बात करेंगे. 5 to 10 मिनट्स की वेट करेंगे, कोई रिएक्शन ऐसा नहीं है, सो यू आर गिवन बेस्ट इंजेक्शन टेक्निक टू दी पेशेंट्स. 15 to 20 मिनट्स चेकिंग. अगर कुछ ऐसे हैं लाइक ए पेन, रेडनेस, एब्सेस और ऐसे कुछ है तो इमीडिएटली पेशेंट से बोलना है, हमको रिपोर्ट करें. वी शुड बी कीप रेडी फॉर एनाफिलैक्सिस ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स. अगर कुछ ऐसा है उनकी कुछ फील हो रही है ऐसे, सो वी कैन अप्लाई फॉर द वार्म एंड कोल्ड कंप्रेस ऑन द साइट टू रिलीव द पेन ऑफ इंजेक्शंस. आफ्टर केयर व्हाट वी हैव टू डू,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट को सेटल करना कंफर्ट पोजीशन पे, उसके बाद रिकॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट टाइप ऑफ ड्रग यू आर गिवन, व्हाट टाइप डोज you are given, what is route and site, then time. It's very important how we can give injection to the patients. That is a recording and reporting. That's name we can say as a documentation. Whatever we are working, time and documentation is very important. And what we are given, because in the busy schedule किसी एक दूसरे की हैंड ओवर नहीं कर पा रहे, सो रिकॉर्ड वी कैन सी, हाँ 12 o'clock injection 1 ample cm avail was given to the patient for allergic purpose is given by this nursing officer with a date and time. So that record can evidence for you and you are done the correct procedure to the clinical area. So that is very important, recording and reporting. After important one work, when we complete the work, because the material, device and article we use, we should be used for further. Some may be the discarded, some may be the disposal, some may be the reuse, some may be the cleaning technique, some. So these purpose compulsory, we should take out all the article, go to utility room and discard for biomedical waste. Cotton will go on the yellow bin and a syringe cover can go for the general blue bin, and for a ampoule can go for the blue box, and for the sharp item will go for the white one, and in case for any blood or other stained devices will go for the red one. Is according to this we have to segregate it, the waste. Then this whatever injection tray ले लिया था, फिर हमने kidney tray लिया, then tray ले लिया, it will be go to the utility room under the running water of wash basin. अच्छे से साबुन से उसकी साफ करके then disinfect करके उसको utility room पे dry करके रखेंगी. Be ready to use for the new procedures. So just we go for the summary of that. There are 5 types of injections. Main injection हम clinical में use करते हैं. Subcutaneous injection है, then intramuscular injection है, then intravenous injection, then intraosseous and intradermal. Very common injection we are using intramuscular and subcutaneous, because every subcutaneous is the best example for diabetic patients. Intramuscular injection is any patient is comes with a temporary pain or anything, na? So we can immediately follow. So main in the injection procedure, what as a nursing officer or healthcare profession has to check, infection is there or not, and reaction is arise or not, and pain is came or not, and administration either you are done correct technique, correct positions you have to check, and any needlessly injury to you and needlessly injury to the peer group or team people. That is very important as a healthcare profession to minimize the healthcare related infection to the patient, hospital as well as the healthcare workers. So we always keep your mind to follow the good hand hygiene, maintain clean environment both patients as well as you, and prepare the medication in the clean container conditions, and non-touching, no touch technique, special skin cleaning for using of antiseptic, and we have to wash our hands before and after, dispose properly all the articles used in the procedure, and we have to record for the procedure. This is very important. We always keep in the mind as a home message when we practice for the safe injection practice to the clinical. These are the reference we took: procedure management guidelines, allergic anaphylactic reactions, medication management procedure, and hazards of medicine, safety handling, how to done and remove the personal protective in the injection. These are the reference guidelines we follow, prepare for the injection procedure. Thank you so much for your patience.